Hello, hello. We have reached the B part of Lewis structure in chemistry. Sorry for that noise. We've reached the B part. Okay, basic rules remain the same as in A part. We're just practicing it for a double bond, for a triple bond compound. Uh, that's it. Okay, let's take a double bond compound. अब last time हमने लिया था hydrogen which had single bonds. We have taken methane which had single bonds. Now let's attempt double bond. We have studied double bond, alkenes, alkynes, and all that. And even if it is not alkene, alkyne, there can be other molecules which have double bond or a triple bond, like nitrogen N2. It has triple bond and it's not an alkene, alkyne. So basically we are studying double bond and triple bond Lewis structure. ठीक है, डबल बॉन्ड का क्या लेना है? डबल बॉन्ड का क्या लें? डबल बॉन्ड का लेते हैं ईथीन. ओके, वी नो दैट ईथीन is this fine for you? Ethene, I don't need to explain. C2H4. Okay, now the basic structure will be ith means to, ene means, let me write the name. ith means 2 carbon atoms, ene means double bond. इतना तो हो गया. Now let's make the remaining valencies. Completed the 4 valencies of each carbon. ये बन गया इसका structure. Each carbon has 4 bonds, 4 covalent bonds. That too between carbon and one हर हाइड्रोजन के बीच में एक single bond. Now we want to make the Lewis structure. Remember what are the steps? Steps is हर चीज जो इसमें present है उसका valence electron निकालना है. We have taken out in the previous one, but we will still find out. For carbon, atomic number of electrons is 6. So electronic configuration becomes 2, 4. L shell में, L shell, it's like L shell में there are 4 valence electrons. Let's look at hydrogen. That's a poor baby. It has 1 electron. And जो भी K shell में, it has that 1 lonely electron. Fine. So we found out the valence electrons. कार्बन में 4 हैं लास्ट शेल में और हाइड्रोजन में 1 है. Now we have to make the Lewis expanded structure. So let's start. How do we do? Let's do the dot one first, the easy one first. Okay, first I am taking this carbon atom, the first carbon atom. Okay, first carbon atom. I have to make 4 valence electrons for it. Okay, so if it was a normal carbon atom, तो इसके मैं ऐसे बनाती, distributed all over, but I have to be smart. Can I see a double bond here? I can see a double bond here. That means इस तरफ 2 electrons दे रहा है कार्बन, इस तरफ 1 दे रहा है, इस तरफ नीचे 1 दे रहा है, राइट हैंड साइड को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन, ऊपर दे ही नहीं रहा. इट इज नॉट शेयरिंग एनीथिंग. सो आई विल बी स्मार्ट एंड आई विल नॉट make the electron on the top. I'll make the 2 electrons of this carbon atom this side only. Fine? Okay, 1 carbon atom done. Now look at the second carbon atom. This also has 2 electrons here and there, and 2 it has given in sharing. So what happens is, these are the 2 electrons of this carbon atoms, or I should make them circles only. Let me make them circles. So this carbon atom has
I hope this is visible. This carbon atom has these two electrons. Now that part is done because it had double bond, so we made 2 electrons for this, 2 electrons for this. Now let's come to this hydrogen. It is sharing only 1 electron. तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बना दिया, एक इस हाइड्रोजन का बना दिया, एक इस हाइड्रोजन का बना दिया और एक इस हाइड्रोजन का बना दिया, और इसके इलेक्ट्रॉन बनाना भूल गए थे, वेरी बैड. Oof, these are red electrons. What am I doing? So dirty work. This carbon atom we had decided we'll make red electrons so that we can identify properly. So let me make carbon के electrons. Carbon का ये electron दिख नहीं रहा. Okay, so let's see that कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की शेप कैसे हो सकती है. या तो ब्लैक डॉट हो सकती है या फिर रेड डॉट हो सकती है, कोई भी हो सकती है. और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की शेप ऐसे होगी. नाउ वी वर मेकिंग इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इधर है, एक नीचे है, एक उधर है. इसके चारों वैलेंस कंप्लीट हो गए. इट शुड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. डज इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द रेड वंस? यस, इट हैज. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द हाउसेस. दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, द प्लॉट एरिया. किसको कितना बड़ा घर मिलेगा? आई टेल यू, द स्मॉलर द बेटर, easier to maintain. Okay, so let's we'll just write because whatever. So there's a hydrogen here. Okay, one hydrogen here, one hydrogen here, one hydrogen here. इसका क्रॉस और इस हाइड्रोजन का क्रॉस. So this is one short form of ethene. Now some books write this convention. I have seen it otherwise also, but some books show it as a convention, and maybe we should start using that only. कि जब ऐसे लिखा होता है, when the thing is horizontal, then the electrons are made vertical. मतलब क्या? They are written horizontal. The electrons will be written vertical. हियर इसका ये वाला, ये ऐसे और हाइड्रोजन का ऐसे, कार्बन का ऐसे, हाइड्रोजन का ऐसे. और जब हम ऐसे जा रहे हैं, do you understand what I'm getting? I know I'm being slightly confusing, but whenever the atoms are vertical, then the electrons are made horizontal. ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का. Now इसमें the atoms are going horizontal, right? तो हमने इलेक्ट्रॉन वर्टिकल बनाया. That's the only thing. यहाँ पे हमने एटम्स हॉरिजॉन्टल बनाए, तो इलेक्ट्रॉन्स वर्टिकल बना दें. सो दिस इज अ कन्वेंशन आई हैव रेड इन सर्टेन बुक्स कि दिस इज हाउ इट शुड बी मेड, एंड दिस इज नॉट द बेस्ट वे.
So probably you can follow, and from next time, from next one, I will also try to follow this only. Okay, now let's make the structure one. Should I make here only? I'm feeling lazy. Can I make here only? Okay, so what I am doing is I'm making the house of the first hydrogen. First hydrogen needs how many electrons? 2 electrons. ये ले दो, तो उसका घर हो गया ये, ठीक है? इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दिस हाइड्रोजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका घर हो गया ये, इसका घर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका घर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, चारों हाइड्रोजन्स के तो घर हो गए. नाउ अबाउट कार्बन, वेरी केयरफुल. ईच कार्बन नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बहुत ही खाओ, बहुत ज़्यादा ही खाना चाहिए इसको. सो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. It needs all these electrons. So this carbon's house will start from here, cover this also, cover these 4 electrons also, and see. Now can you see carbon house? This is the carbon house. It has these two, these two, these two, these two. It has 8 electrons. Now this is the carbon house that you have to make. Children make mistake here, where they make the house. Let us see this carbon. Again 8 electrons. 2 इससे लेगा, 2 यहाँ से लेगा मतलब शेयरिंग में किया गया, उसे छीन नहीं रहा है, अपने आप दिया हुआ है. 2 2 4 एंड 2 उसके अपने ये वाले और 2 दूसरे कार्बन के. सो उसका हाउस will extend from here to here. These 2 electrons should be apart, these 2 electrons should be apart, these 2 electrons should be apart. Right? So this is the structure of E3. Got it? Chalo. Let's make the structure of a triple bond structure, which is nitrogen. The first step, we know it is like this. We just know it. If we don't know it, let's find out. Atomic number of electrons in nitrogen, 7. So electronic configuration, 2 5. Kl, valence shell becomes, last shell electrons become 5. Okay, now both of them are nitrogen, तो हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं. Just the valence shell is 5 electrons. Okay, now let's make the Lewis structure. It will be easier because there are only 2 atoms involved. Okay, so 1 nitrogen, and we have to make, remember, 5 electrons. ओके, वैलेंस शेल ऑल 5. अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये वाले नाइट्रोजन ने कितने कंट्रीब्यूट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स? इट हैज कंट्रीब्यूटेड 3 इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज कंट्रीब्यूटेड 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जैसे वहाँ पे कार्बन ने हैड कंट्रीब्यूटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर दिस वन हैज कंट्रीब्यूटेड 3 इलेक्ट्रॉन्स. So maybe we can make them like this. Now it is still left with 2 more electrons. देखो 5 थे ना उसके वैलेंस शेल में, 3 तो हमने यहाँ बना दिए इसको देख के. अब 2 काफ़ी दूर, the maximum दूर possible will typically not make here or make here. We'll typically make them here in a pair as far as possible from this one. Okay, the other nitrogen, so एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन looks like this, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन looks like this.
So now this nitrogen, the second nitrogen also has, see, it is sharing 3 electrons. तो उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में डाल दिए. इसके भी अभी टोटल 5 होने चाहिए थे, 3 हुए, तो उसके बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स साइड में एज अ पेयर they will remain like this. Okay, now let's make the house structures. I'll repeat for this because it's not very difficult this time. This is the basic structure we got. Now we'll make the house structure. House structure में क्या करना है? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 2 तो ये रहे, ये 3 उसके अपने, तो 5 तो अपने हो गए इसके खुद के, और 3 वो उसके साथ दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा. सो 2 + 3 + 3 8. So this house of this nitrogen extends like this. Okay, now it contains 8 electrons. Let's see what is happening to the other nitrogen. It has these 2 crosses, 3 crosses, 5 crosses of its own, 5 electrons of its own, right? But it needs these 3 to complete the octet. You have to do what? Here we need octet rule. 2 shell की बात आ गई ना? When you have 2 shells, when the L shell is involved, you have to follow 8 electrons. So I will complete its house. This nitrogen house will be have this also, and this also. तभी उसके 8 complete होंगे. Be careful कि इस नाइट्रोजन के साथ वो नहीं चले जाए. This hydrogen should not be included in this house. So this nitrogen has a house like this with 5 electrons of its own, 3 electrons from the other hydrogen. You can see 3 bonds, 1 bond, 2 bond, 3 bond. Okay, so this becomes the base structure of nitrogen. These steps, just remember these steps. Find atomic, remember, find name, you should know the atomic number by now. Find the atomic configuration, find valence electrons, complete those valence electrons. Please, कई लोग बच्चे करते हैं ये लिखना भूल जाते हैं. ये लिखने से तो इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ. So you have to complete the valence shell. Make all 5 electrons if it is nitrogen, make all 4 electrons if it is carbon, and like that. ठीक है? Hope this structure. B explains your double and triple bond molecules. Okay? All the best. Thank you.